हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैशन कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस सीरीज में अगला टॉपिक है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो आज मैं इसका सिलेबस आपको बताने वाली हूँ और मेरे सिलेबस सीरीज की प्लेलिस्ट में अगर आप चाहेंगे तो मैंने 4 से 5 मिनट के सिलेबस अभी तक उस पर अपलोड करे हैं और आगे भी मैं इसके पूरे कर रही हूँ। तो बीई और बीटेक, फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी, इन सब में अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो ये वो सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने रहेंगे। तो इसका सिलेबस मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाला है। इसको देखिए, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और टेक्स्ट बुक्स के नाम दे रखे हैं और रेफरेंस बुक्स के नाम दे रखे हैं और नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। यस, ये पूरा सिलेबस एक बनता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आपको चैप्टर्स के नाम, यूनिट्स के नाम या मॉड्यूल्स के नाम कह सकते हैं, उसके बाद बुक्स के नाम जो यूज करनी है और प्रैक्टिकल, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी यूनिट 1 है हजार्ड एंड रिस्क, सेकेंड यूनिट है प्लांट अवेलेबिलिटी एंड प्रोसेस रिलायबिलिटी, थर्ड यूनिट है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, फोर्थ यूनिट है कॉन्सिक्वेंस मॉडलिंग और फिफ्थ यूनिट है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो ये हमारे वो चैप्टर्स है जो हमको इसमें स्टडी करना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हमको स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, स्पेशली वर्क प्लेस हजार्ड्स, जो कि होते हैं मैकेनिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, इकोनॉमिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल हजार्ड, ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड और इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ये सब हजार्ड्स के टाइप्स है जो इस सब्जेक्ट में स्टडी करने रहेंगे। फायर हजार्ड्स, explosion hazards, toxic gas release, structure of HERA, that is hazard identification and risk assessment. कैसे करते हैं, कौन करता है, क्या होता है, वो सब इसमें हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स, तो हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए इतनी सारी मेथड्स होती हैं, वहां से आप हजार्ड निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस, fire and explosion hazard rating of process plants, Dow fire and explosion hazard index, Dow fire index भी चलता है, fire and explosion hazard index भी है और Dow fire and explosion hazard index भी चलता है और Dow and Mond indexes भी चलते हैं, indices भी। इसका फॉर्मूला है इसमें दिया हुआ। प्लांट लेआउट एंड यूनिट हजार्ड रीडिंग, प्लांट का लेआउट कैसे बनता है और आप किस तरह से हजार्ड्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं प्लांट के लेआउट के टाइम पे, वो सब इसमें देखा जाएगा। प्रीलिमिनरी हजार्ड एनालिसिस, दैट इज पीएचए, ये एक सैंपल रिपोर्ट है उसकी, कैसे पीएचए करा जाता है। हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, दैट इज हैजॉर्ड स्टडी, उसके 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, कैसे करना है। व्हाट इफ एनालिसिस, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, व्हाट इफ एनालिसिस। ये इसकी भी एक तरह से शीट बनती है, ये वो शीट का सैंपल है। केस स्टडीज, प्लांट अवेलेबिलिटी, प्लांट अवेलेबिलिटी एक टेक्निकल टर्म है, मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज में आती है, उसका फॉर्मूला है ये। ways of improving plant availability, it is more or less related to maintenance, means how we can improve the availability of plant or we can improve plant maintenance activities. Process reliability, then MTBF, that is mean time between failures, then MTTF, mean time to failure, and MTTR, mean time to repair. These three, difference between these three. Reliability function, failure rate, bathtub curve, probability relationships, simple reliability estimation, estimation of frequency of occurrence of hazard.
लॉजिक ट्री अप्रोच LTA, सेट थ्योरीज एंड वेन डायग्राम्स। इस सब्जेक्ट में थोड़ा मैथमेटिक्स भी है। बूलियन अलजेब्रा, एंड नॉट और गेट्स, एप्लीकेशन टू प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है प्रोबेबिलिटी का वो इस हिसाब से कि हाई हजार्ड है या लो हजार्ड है या मीडियम हजार्ड है, उसके हिसाब से फिर आपका रिस्क रेटिंग आता है। बूलियन मैनिपुलेशन, फॉल्ट ट्री एनालिसिस FTA, लॉजिक सिंबल्स, डिजिटल लॉजिक गेट सिंबल्स, मिनिमल कट सेट्स, लॉजिक गेट्स जिसमें बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल पर्पस गेट्स। फॉल्ट ट्री क्वांटिफिकेशन, इवेंट ट्री एनालिसिस नोटेशंस ETA, इवेंट ट्री कंस्ट्रक्शन, advantages and disadvantages of ETA, failure mode effect analysis FMEA, FMEA methodology, FMEA criticality analysis और FMECA failure mode effects and criticality analysis, FMEA corrective actions, then FMEA follow-ups, consequence modeling, source models, discharge rate models, flash and evaporation models, dispersion models, explosions and fire, physical explosion, that is of also several types. Explosion is also of several types, confined, semi-confined and unconfined. फिर उसमें भी और segregations हैं, तो उसमें आता है physical explosion, chemical explosion, dust explosions, BLEVE, UVCE, boil overs, ये सब इस सब्जेक्ट में देखना है। Flash fires, pool fires, jet fires, BLEVE, that is boiling liquid expanding vapor explosion, then VCE or UVC, vapor cloud explosion, unconfined vapor cloud explosions, effect models, dose response functions, probit functions, toxic gas effects, thermal effects, explosion effects, software applications for effect and damage calculations, quantification of risk, QRA, quantify risk analysis, vulnerability analysis, accepted and imposed risk, perception of risk, risk indices, individual risk and societal risk, acceptance criteria for risk, ALARP, as low as reasonably possible, presentation and measures of risk, risk contour, F and curve, that is frequency to number curve. थैंक यू। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स के वीडियोस बनाने की और आप तक नए नए टॉपिक्स लाने की।
सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।